अरे रिकॉर्डिंग नहीं की ना, सो कोई मुझे याद नहीं दिलाता. ओके. So yes, when you are shaping your essay around a thesis statement, you just need to do a comparative analysis. And let's suppose the cultural background of Punjab and Sindh. So you need to compose a thesis statement that in what area of the culture you are going to write, or you are going to focus in your writing. Let's suppose you are just focusing on the costumes. ठीक है, तो अब सिर्फ सिर्फ आप क्योंकि कल्चर में तो बहुत सारी चीजें होती है ना, कल्चर में सिर्फ आपकी कॉस्ट्यूम थोड़ी आता है, कल्चर में तो आपका फिर लैंग्वेज भी आ जाती है, कल्चर के अंदर तो आपका खाने पकाने भी आ जाते हैं, कल्चर में आपकी नॉर्म्स भी आ जाती हैं. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बट इन वेट इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग इन योर एसे, तो आपने जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी वही बनानी है कि इस चीज के ऊपर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन. It gives a shape to essay. It determines what information belongs in the essay. So if a reader reads your introduction, so he can better get the idea that your essay would be focusing on this element of the culture, not the every element. Okay, compound subjects. In compare and contrast writing, you will often use sentences. Yes. In compare and contrast as writing, you will often use sentences with compound subjects joined by or nor. In such sentences, the verb always agrees with the subject nearer to the verb. अच्छा. What are the compound subjects? कोई बताएगा? किसी ने पढ़ा है इससे पहले? बताएं. जिनमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है. Yes, जैसे हम कहें Sarah and Maria, this is the compound subject. No, यस. we are not talking बस about जिसमें only आइदर Saria. We are और not talking ये about वर्ड्स only यूज, Maria. Sorry. जिसमें आइदर और इस टाइप के वर्ड्स यूज होते हो. No, 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 no. नहीं, ये तो आपने यहीं पर जो एग्जाम्पल दी हुई है, तो maybe you are getting the idea from this. But compound subject refers to a subject, to a type of subject in which at least two nouns or two pronouns are focused, are used. ठीक है, तो जैसे हम कहें कि compute. Two or more subject. Yes, in fact, two and more subject, but the two and more, doers of the action. Action भले चाहे एक हो रहे हैं या चार हो रहे हैं, लेकिन जो आपका doer होगा, यानी कि जो आपका subject होगा, वो at least दो होंगे. ठीक है, जी जैसे हम ये ठीक. कहेंगे flowers and the thorns are the part of a plant. Now, flowers and thorns are actually compound subject. ठीक है, not actually the doer, but the noun which we are referring to in that subject, in that sentence. So अब कह रहे हैं कि अगर कभी कंपाउंड सब्जेक्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में आते हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द बोथ थिंग इन अ सेंटेंस, so we use neither or nor. Sometimes these types of words are used. अब जैसे एग्जांपल दी हुई है, इन सच सेंटेंसेस द वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर फोकस करना होता है हमें. ये नहीं है कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट अगर होते हैं तो वी शुड टेक इट एज द प्लूरल सब्जेक्ट. Neither ordinary programmers nor a compulsive programmer knows how to adopt the new program. Now, if you see that यहाँ पे प्रोग्रामर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्रामर्स है. अब आप ये कहेंगे कि ये भी और ये भी दो इस्तेमाल हुए हैं, तो इट कुड बी अ कंपाउंड सब्जेक्ट. ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे जब निदर और नॉर लगा देते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, कि भाई ना तो ये ना फिर ये, तो इसलिए यहाँ पे नोस लगाया. तो वही कह रहे हैं कि जो करीब होता है ना, अगर यहाँ पर ये होता neither a compulsive programmer nor ordinary programmers, अगर यहाँ होता तो फिर ये नोस के बजाय नो हो जाता. इज दिस क्लियर? यस मिस.
ठीक है, ओके। Use each of the following compound subjects in a sentence. अब ये जाहिर सी बात है, when I'll give you the slide, so only you can do it, and I am not going to burdenize you because you need to submit your assignments. So yes, several short weddings or one long wedding is, ठीक है, either the bride's relative or the groom. You know, these types of sentences we often use in compare and contrast essay. Viewing and representing, cooperative learning, working in a small group. Look at the fact, अब यहाँ पे ये एक मैंने आप लोगों को एक वो दिया था, टास्क देना था मुझे क्लास में, बट डेफिनेटली वी कैन नॉट डू इट, जस्ट आई आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको करना क्या था, कि ग्रुप में या पेयर्स में काम करना था, and you need to look at a photograph which I have included in the next slide, and you need to create a large Venn diagram by orally comparing and contrasting the occupational risks, benefits, responsibilities of the two men in this photograph, in the upcoming photograph. Each of you then write a paragraph comparing or contrasting one common feature of the two men's job. For example, opportunities for physical exercise or career mobility. Maybe the both profession do have the same kind of physical exercise. Finally, combine information into a single pack, compare and contrast essay, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। One is the teacher and one is the technician. अब इन दोनों के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, यू कैन बेटर रिफ्लेक्ट ऑन इट, ठीक है। ये एक और practice exercises and write an article comparing and contrasting two basically similar things such as racing bicycle and bikes, or two other items of your choice that रेसिंग बाइक्स या रेसिंग बाइसाइकिल, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। Use a Venn diagram to organize details to explain similarities and differences between two items. Your अच्छा audience क्या, your teacher and your classmates, and length should be 2 to 3 paragraphs. Is this fine? I hope that things are clear to you. Yes or no? Yes, यस miss. मैम। और जो आपने बताया जो टास्क वेन डायग्राम जो बनानी है, तो वो इसी फोटोग्राफ पे बनानी है जो आपने स्लाइड में शो करवाई है? बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब Okay. whenever I provide you the slide, ठीक है, मैं आपको बस इस अपने जो आप लोगों का एग्जाम जो असाइनमेंट है इसकी डेडलाइन के बाद I will provide you the both slide, and if any of you wants to do something on this on the mentioned task, so he or she can submit it to me definitely, and I will reflect back on your writing. I will review your writing, I will give the feedback, ठीक है। Okay, ma'am. All right, thank you so very much. I'm just ending the class here. I've already taken much time. So we'll inshallah resume and continue our next session in the next class. You can just please, I am just reminding you again that do come with your laptops or the desktop along with your mobile phone in the next class so that we can conduct an activity. Okay? Okay, ma'am. All right, thank you so very much. Allah Hafiz. Okay.